Good morning students. We will do question from exercise 3.7 because already I have told you the related identities from this exercise. Okay, so come to see the questions from this exercise. The first question is कह रहा है if sin x equal 2/3. The first question is exercise 3.7. The first question is कि sin x is equal to sin x इक्वल 2/3. दिस इज गिवन और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x. cos 2x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आइडेंटिटी ऑफ cos 2x इन टर्म ऑफ sin x. यू नो cos 2x इक्वल 1 minus 2 sin square x. So this is equal to 1 minus 2 into 2/3 whole square. So this is equal to 1 minus 2. 2 2 ja 4/9. Here just I have put the value here 2/3 here, that is equal to 4/9. So 4 2 ja 8, 1 minus 8/9. 9 1 ja 9 minus 8, 1/9. So this is the answer cos 2x. The cos 2x value of cos 2x is 1/9. I hope everyone is clear about this question. Okay. See the question number 6 first part. Question number 6 first part. And the first part is आपसे बोल रहा है कि so that cos 2x. The question है आपसे cos 2x plus 2 sin square x. 2 sin square x इक्वल 1. दिस इज टू बी प्रूव. ठीक है, ये आपको शो करने के लिए बोल रहा है कि cos 2x plus 2 sin square x इक्वल 1. यू नो cos 2x is what? 1 minus 2 sin square x. 2 sin square x and plus 2 sin square x. This is the identity. Cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. So 2 sin square x cancel out. So this is 1 and this is equal to RHS. So this was very easy question because you have to put generally only the identity of cos 2x here and minus 2 sin square x plus 2 sin square x will cancel out and the answer will be 1. That is RHS. Okay, so see and try to understand how the identity is applied. So the next question is, come to the next question, question number 9. Question number 9. And what is the question number 9? कह रहा है कि cos x, cos 2x, cos 4x, cos 3x. cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x. cos 4x, cos 8x equal to sin 16x sin 16x upon 16 sin x. दिस इज टू प्रूव. ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि sin 16x upon 16 sin x इक्वल cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x. So देखो बेटा क्वेश्चन इज सो इजी. जस्ट टेक RHS. RHS will easily come out. See here. What is RHS? The RHS is sin 16x upon 16 sin x. This is the RHS. 16 may be written as what? 2 into 8x. So if you will write this one as a sin 2 into 8x. 8x divided by 16 sin x. Then you know what is the identity? Sin 2x equal 2 sin x cos x. So simply this can be written as 2 sin 8x cos 8x divided by 16 sin x. Again see here, sin 8x may be written as 2 into 4x. So this can again be written as 2 sin
2 into 4x into cos 8x डिवाइडेड बाई 16 sin x। देखो यहाँ से sin 8x को फिर आप क्या लिख सकते हो 2 into 4x। अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म sin 2x, then it is 2 sin x cos x। So write this is 2 into 2 sin 4x cos 4x cos 8x divided by 16 sin x। तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, ये आपको मिल जाएगा 4 sin 4x cos 4x और cos 8x divided by 16 sin x। Again see here sin 4x can be written as 2 into 2x। So this is 4 sin 2 into 2x cos 4x cos 8x divided by 16 sin x। Now what is here? Sin 2x equal 2 sin x cos x again। So this is equal to 4 into 2 sin 2x cos 2x cos 4x cos 8x divided by 16 sin x। I have applied here identity for sin 2x। अब देखो ये 4 2 जा 8, so this is 8 sin 2। This is equal to 8 sin 2x cos 2x cos 4x cos 8x divided by 16 sin। Once again apply sin 2x। Sin 2x is equal to what? Sin 2x equal 2 sin x cos x। So if you are applying here, so 8 into 2 sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x divided by 16 sin x। Now see here 8 2 जा 16 sin x, so 8 2 जा 16 sin x cancel out, so the remainings are cos x cos 2x cos 4x और cos 8x, and this is equal to LHS। So simply you can see here this was very easy questions, and definitely all of you have understand this question easily। So today see the last question। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस क्वेश्चन इज 17 क्वेश्चन नंबर सॉरी 13। दिस क्वेश्चन इज 13। आपसे कह रहा है प्रूव दैट tan x plus cot x equal to 2 cosec 2x। सॉरी बेटा, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन कुछ 13 है। प्रूव दैट tan x प्लस cos 2x इक्वल एंड डिड्यूस दैट। ठीक है, पहले तो आप इसको इतना प्रूव करना है और फिर क्वेश्चन कह रहा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड tan 75 प्लस
cot 75 plus cot 75 इक्वल 4। cot 75 इक्वल 4, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लें। आपसे बोल रहा है कि tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल 2 cosec 2x, cosec 2x ये प्रूव करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले सी हियर, देखो tan x प्लस cot x, दिस इज द आइडेंटिटी, सॉरी tan x प्लस cot x इज गिवन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सी tan x इक्वल sin x अपॉन cos x and cot x इक्वल cos x अपॉन sin x, यू नो वेरी वेल। ठीक है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get here sin x into sin x, sin square x plus cos x into cos x, cos square x upon sin x and cos x. And what is here? You know, sin square x plus cos square x equal 1. So this is equal to 1 upon sin x cos x. Clear? See. Here just multiply and divide by 2. If you are multiplying and divide by 2, then 2 by 2 sin x cos x. Here I have done multiplied 2 and divide by 2. And this is what? This is equal to sin 2x. So this can be written as 2 upon sin 2x. And you know sin 2x is reciprocal of cosec 2x. So this is equal to 2 cosec 2x. So first of all we have proved here this is equal to a RHS. अपने यहाँ से देखा कि we have proved here कि this is equal to 2 cosec 2x। तो पहला पार्ट इसका प्रूव्ड है कि 2 cosec 2x जो है इसका RHS होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आपसे पूछ रहा है एंड डिड्यूस tan 75 प्लस cot 75। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर tan x cot x है तो ये 2 cosec 2x ही होगा, मतलब x का डबल आएगा cosec के फॉर्म में। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। Here we have to find tan 75 plus cot 75. It is to find, so this is equal to 2 cosec 2 into 75 because already we have proved here. तो 75 का डबल कितना होगा 150. So this is equal to 2 cosec 150 and 150 may be written as 180 minus 30. So this is equal to 2 cosec 180 minus 30. ठीक है, और cosec 180 minus थीटा इक्वल cosec थीटा, कि आपको पता ही है कि 180 minus थीटा में no change in trigonometric ratio. So this is equal to what? 2 cosec 30 degree, and since this is 180 minus theta which is in the second quadrant, and you know cosec is positive in the second quadrant, and the value of cosec 30 equal to, so this is equal to 2 multiplied 2, that is equal to 4. This is equal to ठीक है। तो here we have proved here कि the value of this one is 4. I hope everyone is clear about this question which I have told you today. Okay students, so we will do some important question related to this exercise in the next lesson. Thank you students.